नमस्ते, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण सबको। गुड इवनिंग। मेरा इंट्रोडक्शन तो 2 बार हो चुका है, सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। विल स्टार्ट राइट अवे। Today we are talking about succession, wills, inheritance. So what is succession? What is inheritance? Why do we need to know about it? क्यों हमें inheritance, succession, wills इनकी जानकारी होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? बेसिक नॉलेज आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू। सो सक्सेशन और इनहेरिटेंस एक ही है। हम कितने बार ये कभी वर्ड सुनते हैं सक्सेशन, कभी सुनते हैं इनहेरिटेंस। इट्स उत्तराधिकार, विरासत। जो इनहेरिटेंस है हमको विरासत में मिलता है, सक्सेशन है जो हम उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकार मिलता है। सो when does succession and inheritance of a property or estate or movables, immovables take place? It takes place on the death of a person. So succession is the process by which the estate, that is movable and immovable properties, are distributed among the mainly the heirs. Normally it is the heirs or anyone nominated if there is a will. So there is a succession in India. It refers to immovable property and movable property. Immovable property follows the law of the land where property is situated, and movable property jahan deceased person was domiciled at the time of his death. So आप भले ही इंडिया में आपकी डेथ है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी अगर लंदन में है तो लंदन का लॉ अप्लाई होगा, इंडिया का नहीं, भले ही आप इंडिया में रह रहे थे। सो दैट इज हाउ द सक्सेशन इज रिलेटेड टू मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ succession depends on testacy and intestacy. There are two forms. Succession means हम उत्तराधिकार हमको विरासत में कैसे मिलता है? There are two ways: testamentary succession and intestacy. So intestate succession, where there is it is provisions of Hindu Succession Act will apply here, and intestate succession means जब where there is no will, और पर्सन जब जिनकी डेथ होती है वो बिना विल, बिना कुछ लिखा पढ़ी के अपना सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। सो दैट टाइम हिंदू सक्सेशन एक्ट विल अप्लाई, एंड अगर उसमें से दोनों, अगर हस्बैंड वाइफ स्पाउसेस आर हिंदूज, देन हिंदू सक्सेशन एक्ट विल अप्लाई। अगर इंटरकास्ट मैरिज है, हिंदू मुस्लिम की, हिंदू पारसी की, हिंदू, then the marriage is normally solemnized under Special Marriages Act. इसलिए Indian Succession Act will apply and not Hindu Succession Act. Okay, thank you सावित्री जी। Then अब जैसे कि आपने बताया कि अगर हम विल बनाते हैं तो इंडियन सक्सेशन एक्ट को फॉलो किया जाता है, तो नाउ कैन यू टेक अस थ्रू द प्रोसेस कि विल कैसे बनाते हैं और उसको इफेक्ट और एनफोर्स कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताएं। Yeah. So what is a will? Will होता क्या है? Will falls under the testamentary disposition, where a person writes, or it is a writing. Will is a document, a writing which indicates the intention of the person कि मेरे बाद मेरी immovable property, movable property, my estate किसको जाएगी, कैसे जाएगी. So he writes it down in the format, and that is called a will. Who can make a will now? Any person can make a will, but he has to be of sound mind and who is not a minor. So अगर आप ये आप normally insane है, but जिस दिन आप sometimes you're mentally unstable, but when you're making a will, that day you're stable, or that part of the day you're stable and it can be proved, then you're capable of making a will. Then a married woman also can dispose of her property, whether she takes it before the marriage or after the marriage. By a will, she can give away her share in the property, whether it's ancestral or whether her self-acquired property, or which she is likely to get.
So married women also can now make a will. So even a deaf or a blind or a dumb person can make a will if they are capable of knowing that what they are doing. Like अगर एक deaf है but he can see and write, dumb hai, he can't speak but he can write. So all, and a blind person capable of writing in his own braille language. So all these people are competent to make a will. So what is a valid will? A will has to be done. The format need not be as there is a normally a format provided in the Indian Succession Act or a High Court rules and all. But the main thing is it can be in any form, but there has to be signature of the testator and attestation by 2 or more witnesses. Both the witnesses may not the witness A can sign today and the witness B can sign tomorrow. But at both the witnesses has to sign in the presence of testator. I can't make a draw up a will and send it. Okay, जाओ B से sign करवा के ले आओ, A से sign करवा के ले आओ. No, they have to sign in my presence. So that's how a valid will be there. Now, what is the registration of a will? Normally, many times we get मुझे questions आते हैं कि मैं will बना रही हूँ, मैं register करवा लूँ और better होगी और strong होगा, कोई challenge नहीं कर पाएगा. So registration of will and Indian Registration Act, there's no compulsory, no mandatory to register a will. But it helps in establishing genuineness of a will. If there is a registered document, obviously it has a larger standing before the court. Court में अगर केस गया, किसी ने बिल चैलेंज की, तो अगर वो registered है, तो naturally it will get again some weightage. Now, but अगर registered will है, but it can also subsequent will can be made and a registered will can be negated. That means if अगर पहली will registered है और subsequent will से मैंने वो change कर दिया है, तो मेरी subsequent will be valid will and not the registered will. Oh, thank you, Savitri. अब जैसे कि आपने बोला कि I can make a new will in spite of registering an old will. तो इसी तरह अगर suppose मैंने एक will बना दी है and then I change my mind, मुझे अब उस will के हिसाब से नहीं चाहती मैं कि मेरी property बांटी जाए to my heirs, तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और कैसे अपने उस विल को बदल सकते हैं या नई विल को कैसे इफेक्ट दिला सकते हैं? So depends now. अगर तुम चाहती हो कि मैं मेरी पूरी विल, मेरे सारे एसेट्स मुझे डिफरेंटली अब देने हैं, तो you can make a new will, but and it will supersede the earlier will. So subsequent will be valid and the previous will stand cancelled or revoked. If you want only one aspect of a will, like एक property या एक shares खाली change करना है कि नहीं अब ये मैंने बेच दिया है या मुझे नहीं इसको नहीं A को नहीं B को देना है, then you can execute another document which is called a codicil. So a codicil में खाली आप उतना पार्ट ही डील करोगे and you will mention in the codicil कि rest of the remaining will, मेरी original will is valid, only this much part I am changing by a codicil. So the document by which we change the original will is called a codicil. Okay. And how can also if you want to change the change entirely the will, you can just tear it off the originals and any copies you have. Another is when can a will be revoked? On marriage, a will stands revoked automatically without in law. Any formal procedure, it stands revoked. Yes, sir? Yes. Okay, ma'am. Thank you so much.